Good morning to everybody. This is the poem about Draupadi. As we all know, Draupadi had 5 husbands, and I pity her. At the same time, I appreciate her. So the theme of the poetry is such. Appe Draupadi, nikku namaskara. Bharata kate ninaddu uddhara. Appe Draupadi, nikku namaskara. Bharata kate ninaddu uddhara. Kannanere bengidu beepi ponnuligu ninna pudare sanjeevini sara. Ainu janatappa enjamalta samsara. 5. Ainu janatappa enjamalta samsara. ಬಾಮಿದು ಒಲಿಸಾದು ನಡತ್ತಿ ನಿಂಚ ಕೋಪದ ಕುಂಡೊಡು ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಅರ್ಲೊಂದು ಕಣನೀರು ದೆತ್ತಿನೇನು ಪಂಪಿನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಜುಗಾರಿದ ಕಲೊಟು ಖಜೌದ ಲೆಕ್ಕ ನಿನನೇ ಮಾರುನ ಕಂಡನೀರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಜುಗಾರಿದ ಕಲೊಟು ಖಜೌದ ಲೆಕ್ಕ ನಿನನೇ ಮಾರುನ ಕಂಡನೀರು. ಐನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಏಪಲ ದುಃಖ ಪೊಣ್ಣನ ಬಲಿಯೇ ಧರ್ಮದ ಪೀಠ. ಪೊಣ್ಣನ ಬಲಿಯೇ ಧರ್ಮದ ಪೀಠ. ಸೀರೆ ಒಯ್ಪುನಕುಲು ಅಪಗಲ ಇತ್ತೆರು. ಸೀರೆ ಒಯ್ಪುನಕುಲು ಅಪಗಲ ಇತ್ತೆರು. ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ. There is a daily Mahabharata going on here. The hair is still let loose, untied. Who will write our story? Who will listen to our torments? In the pit fire of slanderous jibes, women burn as if in a sacrificial fire. Come back, be born again in our times, Draupadi, and spit out the fire in your belly. Thank you. முலைகள் முலைகள் சதுப்பு நில குமிழிகள். பருவத்தின் வரப்புகளில் மெல்ல அவை பொங்கி மலர்வதை அதிசயித்து காத்தேன். எவரோடும் ஏதும் பேசாமல் என்னோடே எப்போதும் பாடுகின்றன விம்மலை, காதலை, போதையை. மாறிடும் பருவங்களின் நாற்றங்கால்களில் கிளர்ச்சியூட்ட அவை மறந்ததில்லை. தவத்தில் திமிரிய பாவனையையும் காமச்சுண்டுதலில் இசையின் ஓர்மையையும் கொண்டெழுகின்றன. ஆலிங்கன பிழிதலில் அன்பையும் சிசு கண்ட அதிர்வில் குருதியின் பாலையும் சாரெடுக்கின்றன. ஒரு நிறைவேறாத காதலில் துடை தகற்ற முடியாத 2 கண்ணீர் துளிகளாய் தேங்கித் தழும்புகின்றன. Breasts are bubbles rising in wet marshlands. I watched in awe and guarded their gradual swell and blooming at the edges of my youth's season. Saying nothing to anyone else, they sing along with me, alone, always, of love, rapture, heartbreak. I now call upon Zaithangpui Wangtu. She was born in 1974. She is a writer, poet and painter whose writings have been published in various magazines and journals in Mizoram. She writes in both Mizo and in English. She is also the joint editor of Sabereka Kwangkai, a reputed literary magazine published in Aizawl. I'll read in English. None like you. I could never tire of watching you smile. Sweetest are the words that flow from your hand. There's none like you. Isay lai mel ni a thir nin omlo. Ithai koi bong ni a lai si klumber an omlonge. Ilim nui rol ni a rimoy du om. I an kanem ni a orol klumber an omlonge.
I se shil ni a rimoi ngai om imi ko rol ni a sakming ko moi an om longe nang ma ni a kalung midum tu dang nang ne na len dun ni a hun lim om an om longe. Thank you. US Girl with Black Guitar and Blue Hibiscus. The reality of music is a problem waiting to be solved by the black guitar, not the girl nor the jug of blue hibiscus. The pigeons are insane with grief because you left them. The clouds will be noble and distant as always. The scent of citrus flowers will fade in soft explosions. And the girl will put a blue hibiscus in her hair. And the computer will speak in flawless Japanese, talking of the elegant instant and how the quasars are forever expanding. Kanika Sishage Mukti. Nongan Kivakuire, Pajip Man the makeup top of the soup, Pomo Pazilari, Pajip to Komo, Mapam Kata Naiduri. You will hang the Mikosa Silava, a name Bium Takis in Canada, me and Pamtari. So a sang Mamatam Honto Kuraga, Awang Wanasibli. Marang Kankal Taram than a Thompson Clubney, Palang, over the Pausilaba, and Samangala, Pajip Matatari. Couldn't land in a Tona Handole, Pongrauda, put it up. Koima Madina, Miri Masay Maratole, Sankatuna, Mapala Lana Solava, Palungi Manangalda, Ayuki Menbun Kimishani, Tamna Karabiva, Maniluda, Wakal Sang Sandrayali. Mamana Patabilana Nadina, Pamunda, Utukta Gumnataki, Sahi Mari Romsi, a papa Tapunama, a Tamuna Purke. Take books over Mama Pavana Hungurba, Mama Gisiva. Kananting mang meaning kadagi. The original of my poem is called Egypt. Sangsar jungle da sayam chan Fulan Devi gi Fiji mun Guhadagi ising sohan Manglabani Egypt Fulan Devi Manglabani Egypt Sima Biswas Manglabani Egypt Bharat ki nupi punamak Nate Manglabani Izzat Bharat ki nupa punamak Manglabani Izzat Malengi miyoiba punamaki Manglabani Izzat nangisu hele semba mapu nahakisu. Fulan Devi was disrobed by gangs, forced to fetch water from wells. Fulan lost her honor. Seema Biswas too lost hers. Indian women lost theirs. All Eves lost theirs. Nay, lost is the honor of all men in India. Lost to those of the human race and to yours, O Lord of the universe. Our last writer from Manipur is Moirangthem Borkhania. She started writing poetry and short fiction at a very early age while she was still in the 6th standard. That would be around 11 or 12. Her published works are 2 novels and 3 collections of poems. Moirangthem Borkhania. Kongset Sigidama Pibuk Nungi Nawana Song Pana Pamelai Karamba Matamda Ihak Amambagi Lairos Hadokuna Mangalgi Ipakta Sanajava Pungani Imanang Gitampakta Aina Kumi Ikui Kuitana Nahak Laplani Agimit Manda Tot Labanasin Blue Labanamitta Ashagi Lerang Sarong Sing Fugay na Sarpagi Mami Silani Imagi Minung Sin Kizang Kada Ketan of the Sarpani Lerang in a Nang Adubu Nang Bungairiba Angan ba ayuki at yasigi matanunda amang manong di mapay suyawi. Tabal pabi ahing sige lerol nungda loto na lady hububa nang layong sitki ahing su. Ado na naha. Sem sarapatay kung sat sige dan. Thank you.
storm. Beginning from the past ages, we have been going back to look at these images, but never utter any word, never feel anxious, never raise any question, never ask why it is on any day. You are standing like a mountain, spreading your mane, or like birds flying here and there, to the corners of the world far and wide, by detaining me before this broken mirror, making us unable to move, still looking at my deformed reflection. कवितेचं शीर्षक आहे कुशंका. बाईला कळालंच नाही एका जाडजूड ग्रंथासोबत वाळवी घरात आल्याचं. तिनं स्वतःच फुटपाथवरून आणलेल्या त्या दुर्मिळ जुन्या ग्रंथातील अक्षरांमध्येच अडकून राहिली होती नजर. तिला दिसलेच नाहीत बाजूचे काळे ठिपके. वाळवी पसरतच गेली नव्या जुन्या पुस्तकांमधून कपाटभर, आणि पुस्तकांसोबत कपाटापर्यंतच मर्यादित न राहता खिडक्या दारं चाचपडत ती विस्तारली घरभर. बंदिस्त अक्षरातला आशय भावा मनभर तशी. Yeah, the title is Termite. Woman never understood when, along with the big fat book, the termite turned up in the house. Her sight was fixed in the letters of the old rare volume she had herself brought from the footpath. She could not notice the dark spots near the letters. The termite kept spreading through old and new books, through the cupboard, and along with the books, not limiting itself to cupboards. It spread all over the house, groping for the doors and windows, like the meaning of the caged letters spreading all over the mind. क्योंकि मराठी हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा नज़दीक होती है थोड़ी सी हिंदी भी पढ़ती अंग्रेजी पढ़ती लेकिन मराठी में जो go this side now. Few words will elevate the person, few words will. Okay, thanks. Lemon apa? Lemon green apa? Giju green. जाइए जरा सा चाय पी लेते हैं. वहाँ की चाय होटल के अंदर वो करके रखती ना मेरी बुराइयाँ. हाँ, आपके लिए आपके लिए खाली खाली कर दी हो जो just had a खाली कर दी. आपका चाय ऑर्डर दिया था.
इनका छाता कितना अच्छा है. But still nowadays, five women are riding cycles is a common sight. Because I don't drink. No. I'm after. सर कह रहे सी वो फोटो जरूर मंगवानी है झंडिया भी हाँ Could you please talk about the context of this camp, writers' camp in Kashid Resort? I must say I came with some misgivings, a certain apprehension, because I wasn't quite sure what to expect. But it's really surpassed one's expectations in terms of what it offers. For one, of course, it's a terrific opportunity to just meet writers, women writers of various languages. And then you realize you're actually talking about various languages in more ways than one. It's not just linguistically, but also the fact that people are coming from just very diverse contexts, very different mindsets, very different cultural backgrounds with their own set of challenges. So that kind of interaction has been quite exhilarating. Well, it's a very rich experience, I should say, because I've been able to meet so many people of different ages who are actually like me. And it's like seeing myself in bits, in different little bits. And if you gather together all the bits, then it makes up the whole. In that way, I'm looking at it philosophically as well as physically. And it means it has been a great pleasure for me. Yes, because it's also writers from various languages, isn't it? Yeah, all across. yeah, of course. Yeah. I'm hearing the sounds of different languages, their different looks, their different, types. All these is a great experience of union. Yeah. Bani, you're based in Calcutta. Yeah. But a lot of your fiction actually deals with people in various communities in different parts of the country, if I understand correctly. So is that your way of actually traveling imaginatively? That's very intelligently put by you. I cannot do physical traveling so much, just not as much as I want, but this kind of mental traveling through, the internet, through other people of those communities that I meet from time to time. Yes, I do. And they come, they just swarm into my fiction in various forms. I will read my Sindhi poem only. That is from kitchen. That मां पंहिंजूं रचनाऊं घणो करे रंधिणे में रचींदी रहंदी आहियां, छाकाणि त ज़िंदगीअ जो घणो हिसो उते ई गुज़ारींदी रही आहियां. उहो ई घर जो हिसो मूं लाइ मौज़ून आहे ऐं शायदि मुक़ररु कयल बि. उन सच खे मूं तहदिल स्वीकारियो आहे. भाॼियूं वढींदे, मटर छिलींदे, मसालनि जे मेर में, रोटियुनि जे घेर में, बजेट जे फेर में, कुझु वीचार, कणिक जे दॿे में पियल डायरी या कंहिं अणिभे सणिभे पने ते कंहिं बि रंग जे पेन या पेंसिल सां रहरे रचनात्मक सुख संतोष माणींदी रहंदी आहियां. हक़ीक़त में जीअंदी रहंदी आहियां. हक़ीक़त पेट आहे. उन पेट जूं बुखूं, लाचारियूं, लड़ायूं अहसासींदे, उन्हनि जूं हक़ीक़तूं माणींदे वज़न वञनि विसरी काफ़िया क़ैद बहर बेहल हक़ीक़तुनि जे ठहियल रंधिणे में रचियल मुंहिंजे रचनाउनि में खंड जी मिठाण, मिर्च मसाले जी तिखाण, लूण जी खाराण, रोटीअ जो आकार, चांवरनि जी चंचलता आहे. पेट भरण जो अहसासु थींदो रहंदो आहे. इन करे मां पंहिंजूं रचनाऊं रंधिणे में ई रचींदी रहंदी आहियां.
वसू शांतपणे केस पुसत राहिली. तुझ्याशी बोलते का मी? हो सांग त्याला. आता माझी काळजी करू नकोस. मी राहील अशीच माझी मी. बाई ठेव, बघून जात जा. नाहीतर एखादा आश्रम पाहूया. हल्ली असतात चांगले असे आश्रम एकट्या बायकांसाठी. इतके दिवस आई आई करत लग्नाचा विचार नाही केलास. आता अशी संधी. वसू स्तब्ध झाली. संधी, किती बरोबर आहे हा शब्द. सगळ्यांना ती संधीच तेवढी दिसते. आपल्या भोवतालचा समाज, माई, श्रीरंग सगळं कसं बरोबर बसतंय कोड्याच्या खेळासारखं. एक रिकामी जागा आणि तिथे एक आयती तयार वस्तू. त्या आकारात बरोबर बसेल असं सगळ्यांना वाटायला लावणारी. फक्त त्या रिकाम्या जागेतल्या पहिल्या आणि आताच्या तुकड्यांचा पोत, रंग, गुणधर्म, त्यांचं स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्वच याचा मात्र विचार नाही. वसू शांतपणे टॉवेल खांद्यावर टाकत म्हणाली, तुला मी फक्त त्यानं विचारलं ते कानावर घातलं. मी काही निर्णय नाही घेतलेला. Vasu continued to dry her hair. She said nothing. I am talking to you, Vasu. Say yes to him. Don't be anxious about me. I'll stay by myself. Keep a woman to help. You can always drop by. Or else we'll look out for an ashram. There are good ashram nowadays for women who are on their own. All these days you set aside thoughts of marriage for my sake. But now there is such an opportunity. Vasu was taken aback. What an appropriate word. Everybody would see it as an opportunity. The people around her, Mai, Shriram. Everything fitted in like the pieces in a puzzle. An empty slot and a piece available to fill it. Everyone was sure it would fit exactly. But that the missing piece, the one that was formerly there and now the new one, might have its own texture, color, qualities, its own independent existence. This didn't occur to anyone. As she threw the towel over her shoulder, Vasu said quietly, I only told you he had asked me. I haven't decided what I'll do. Thank you. സെൽവിലെ വൃക്ഷം is the name of the poem. നഗരത്തിൽ വണ്ടി കാത്തു കാത്തു കുഴഞ്ഞപ്പോൾ കൈകാലുകൾ വിടർത്തി വീശി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു വൃക്ഷമായി മാറി. തെരുവരികിൽ ഒരു നൊടിയിൽ ഒരു നർത്തകി മരം. വെയിൽ സൂചികളേറ്റ വിരലുകൾ തോറും നിറഞ്ഞു വിടർന്ന് ഞാൻ അടിമുടി ഉടലറിഞ്ഞു. തെരുവിലേക്കും വാനിലേക്കും പടർന്ന് ചിരിച്ച് അകംപുറം ഉയരറിഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മരം ചൂളമടിച്ചു. നമുക്കൊരേ കാറ്റിനാൽ ചില്ല വീശുവാനാകുമോ? മരിച്ച വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ കണക്ക് എൻ്റെ തണലരിപ്പയിൽ വണ്ടി കാത്തുകാത്ത ജനം പെരുകി. എൻ്റെ ഉടലറകളിൽ പാണലുറുമ്പുകൾ, പാഴ്മരൻ കുത്തികൾ, പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വേരുകൾ ചാരിക്കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുകാരൻ കുട്ടി. തെരുവ് എനിക്കു താഴെ ചതഞ്ഞ ഞരമ്പായി പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 1000 വിരലുകളാർന്ന ഒരു കാറ്റ് വന്ന് എൻ്റെ ഇലകളെ ഉലച്ചുപോയി. जिंदगी की गंगोत्री घर से ही निकलती है. जिंदगी की गंगोत्री घर से ही निकलती है. दिल जब टूट जाते हैं, जिस्म रूठ जाते हैं. दिल जब टूट जाते हैं, जिस्म रूठ जाते हैं. खुद से हम बेगाने हैं, जानकर अनजाने हैं. खुद से हम बेगाने हैं, जानकर अनजाने हैं. दर्द सबको होता है और दिल धड़कता है. दर्द सबको होता है और दिल धड़कता है. नाम हम नहीं लेते पर जिए तो जाते हैं. नाम हम नहीं लेते पर जिए तो जाते हैं. हर फटी हकीकत को साथ लेते जाते हैं. हर फटी हकीकत को साथ लेते जाते हैं. दर्द काले पीले हैं, दर्द काले पीले हैं और अबर नीले हैं. तारीख हम दोहराते हैं, अनार कली बन जाते हैं. అమ్మా వింటున్నావా? రంగడు వచ్చాడా? ఆడికి నా మీద కోపం. నేను డబ్బు సరిగా
పంపించడం లేదని వెంకటతో అన్నాడంట. ఏరా రంగా, వింటున్నావా? నేను సంపాదించేదంతా మీకే అమ్ముతున్నాను కదా. నా ఒంట్లో సత్తు ఉన్నంతకాలం సంపాదించి మీకే పంపుతా. మీరు సుఖంగా ఉండాలనేదే నా కోరిక. ఇక్కడ విషయాలు మీకు తెలవు. నాను ఎంత కష్టపడి మీకు డబ్బు పంపిస్తున్నానో మీరు ఎరగరు. ఎప్పుడెప్పుడు మీ కాడికి వచ్చేద్దామా అని అనిపిస్తుంది. దూరపు కొండలు నున్నగా కాపాడతాయి నాయన. కొయిటా వెళ్ళిపోయి లక్షలు అనుకునేటోళ్ళందరూ ఇంతే. ఈ చాకరీ పగోళ్ళకు కూడా వద్దు. రోగం వస్తే మందిచ్చే దిక్కే లేదు. రాత్రిళ్ళు ఒకటే ఆయాసం, దగ్గు. సిమెంట్ పని వల్ల నా 2 ఊపిరితిత్తులు పాడైపోయినాయంట. Ranga, are you listening? Whatever I'm earning, I'm sending it to you people only. I will earn till my last bit of energy and send you the earnings. My only wish is that you should be happy. You do not know about the happenings here. You are not aware how much hardship I go through to send you the money. I'm always eager to be with you all there. My son, one feels the grass is greener on the other side of the fence. But it is not the case with many who come to Kuwait aspiring to earn lakhs and lakhs of rupees. I do not wish this kind of bonded labor even for my enemies. Here there is no one to give medicines when one falls sick. I cough throughout the nights and feel breathless. I am told that both my lungs have degenerated because of my work with cement. స్త్రీలు పరమ పునీతలని, దేవతలని, సీతామాతలని మీరంతా ఉద్వేగంగా ఘోషించే ముందు, మేము కాదన్నందుకు రోషించి దూషించే ముందు అసలు నిజం గ్రహించండి. అత్యుత్తమ గుణసంపద మాకు ఆపాదించి మంచితనం తాలూకు మహత్వ లక్షణాలన్నీ పులిమి పొగడపూల దండల్లో, జ్ఞానరశ్మినివ్వని సతీధర్మపు చెమ్మటెండల్లో మమ్మల్ని ఇంకా ముంచెత్తకండి. शाळा कशी आसता काय? आणटिल्या बाऱ्यान जमतात तशी शाळेन भुरगीं जमतात काय? इस्पिकाच्या खेळावरी पुस्तकांनी रमतात काय? कवचेच्या म्हज्या साकावरी ती फाटीर दप्तर मारतात काय? म्हज्यावरी थिगळायल्ले कपडे अशेच घालतात काय? शाळेच्या जार्दिनान दादले बायलां लोळटात काय? अर्धकुटी उडयल्ली विडी पोतेरां थंय मेळटात काय? शाळेच्या वण्टीचेर उक्त्यो नटयो लायतात काय? शाळेच्या वण्टीचेर उक्त्यो नटयो लायतात काय? काळ्या त्या बोर्डाचेर शाहरुखाचे पोस्टर काय? Teacher, I've written the story you told me to write. Here, correct it, please. Oh yes, bring it here. Elsa took Sarju's book and began reading it. The moisture from her eyes had fogged her glasses. Elsa's eyes could, with difficulty, make out the letters. Once upon a time, there lived a beautiful girl called Cinderella. Her reading had just begun, and Elsa's face took on varying successive hues of alarm, rage, and grief. She read the entire story and screamed suddenly, "No, the story doesn't unfold like this. It's been written wrong." And Cinderella remains a spinster. And in just her 40s, she grows old. And Cinderella's beloved prince starts drinking in frustration, unable to bear the pangs of separation. Uttering Cinderella's name with every gulp, he painfully awaits his death. सिंड्रेला आकवारच उरता, बियातूल जाता, 40 वर्साच्या पिरायेचेर मात्रें जाता. आनी त्याचो राजकुंवर तो सिंड्रेलाच्या पिकसांक खूब सोरो पियेता. सिंड्रेला म्हणून जिविताचे निमणे खीण मेजिता. आज मैं जब स्पैरो की ओर से यहाँ आई तो आ रही थी तो लगता था कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन देखा जो वाकई आगे समंदर की लहरें हैं, इसके आगे राह नहीं है. और दिस इज़ द लास्ट परहैप्स मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ और मैं नहीं समझ पा रही थी जो मैं कहाँ इसे ड्रॉप करूँगी, लेकिन आज लगता है जो स्पैरो देख करके मुझे मेरी मंजिल पहुँच गई, इसके आगे मुझे नहीं पहुँचना है. मैथिली, कैन आई स्पीक इन मैथिली? या
मैथिली हमर सबक जे भाषा छियै ओ विद्यापतिके भाषा छियै, आदिकाल एंशियंट टाइमके भाषा छियै। और हम बुझै छियै जे बहुत रिच साहित्य मैथिलीके छै, लेकिन ओकरा एतेक एखन तक चूँकि संविधानमे जगह नहि भेटल रहै ताहि कारणसँ ओकरा एखन तक आनल नहि जा सकलै प्रकाशमे। और खास कऽ के महिला राइटर्स जे महिला लेखिका छथिन हुनका साथ तऽ बहुत इफ्स एंड बट्स छै। वो तऽ चाहितो बाहर नहीं जा सकते छथिन, क्या तो पारिवारिक और सामाजिक तरह तरह के हर महिला के सामना करे पड़े छै समस्या के। लेकिन मैथिली लैंग्वेज एतेक मिठास छै जे एक दूसरा के अगर गालियो दै छै तऽ लागे छै कि अरे कतेक मीठ बाजै छै, गालियो ने ओकरा प्रतीत लागे छै। That is called Jaratari Sire Anchu, brocade border. As I told while reading, I wrote it for WSF. The topic was border, and I wrote about sari border. ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಜರತಾರಿ ಸೀರೆಗೆ ಅಂದವೆಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ. ಒಡಲು ಸೆರಗಿನ ಸೆಡವು ಸಹಿಸಿ ಸರಭರನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ವೈಯಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗುಮಾನವಿರದ ಚಿತ್ತಾರದಂಚು. ಹೂವು, ಬಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಪುರ, ನವಿಲು. ಒಡಲೋ ಕನಸಿನ ಕಡಲು, ಸೆರಗೋ ಬಾನಿನ ಇರುಳು. ಆದರೂ ಮೆರೆಯುವುದು ಕಂಪಿಸುವ ಇಳೆ ಅಂಚು. ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ನಗುವಂತೆ ಒಡಲು ಸೆರಗಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ. ಒಡತಿ ಹೊರಳಿದರೆ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಕನೆ ಮಿಂಚಿ ಸರಿದ ಹಾವು. ಅಂಚು ಮೀರಿದ ಪಾದ, ಹೊಳೆವ ತುದಿ ಬೆರಳು. ಮಿರಮಿರನೆ ರಂಗು ಮದರಂಗಿ ನಡಿವೆ. ಮಿರಮಿರನೆ ರಂಗು ಮದರಂಗಿ ನಡಿಗೆ. ನೆರಿಗೆ ನಡುವೆ ಸುಳಿದು ಸೆಳೆಯುವ ದ್ಯೂತ, ಎಳೆದಷ್ಟು ಗೋಪ್ಯ. ಅಂದಗಾತಿಯರ ಚಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜರತಾರಿ ಸೀರೆಗಳೇ ಬೇಕು. ಚಂದ್ರ ತಾರೆಯರ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲು ಬರೀ ಸೀರೆಗಳೇ ಸಾಕು. ಈ ಮೋಹ ನಾವು ಬಿಡುವುದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆದರೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ನಾಗರಿಕ ಮಂದಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೀರೆ ಅಂಚನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. What do you want to bring in your writing? I want to bring that people should know that the women are how they are suffering politically, economically, and emotionally at their home, at their workplace, everywhere. What is the importance of Northeastern writing in Indian literature? Importance I don't know, but problem is this no Assamese. I generally write in Assamese. Assamese writings can be read only by the Assamese reader. That's the problem, because we cannot through our message to the nation. That's the problem. Now the Sparrow and Kotha, this organization, they are doing this work. That's why perhaps it will be very good for us, because we can throw our message to the nation. How do you feel about this camp? Yeah, it's very nice, it's fantastic, wonderful. Their welcome is when it was dark and everywhere it was light. Lighting was going on. It was very fantastic. So I phoned to my home that it's a very fantastic and wonderful arrangement and welcome to us. It's really a celebration for us. Yeah. Puan sin zoval moi irong lua e chan hnoi bia cham zo nu te sheng puya moi khip le chol wayang inol to nu nem duai lo zo ta puan chu lengi phuar nan I duan chu amoi na ngei zo ta puan zo nu zong ten kan choi hluan choi zel tang I mangle tuan ma se rang kalen iangin kan phuar thang achan chuanin tal tang I zalen swalin khwanu leng choi zo fa tin zalen piang kan ni asen kan dang nem mei apa in don chiang velul te wala kan zo mi nuk pui zung tha a to love sil puana to ni se zong zo wal tin an leng nge yang ni lenin zo ta le nokhal ha in
what it is about actually? This is a reaction to Mizo women are always expected to be in their traditional clothes, whereas the men themselves, they wear anything like they like. But when women wear any other clothes other than the traditional, which is the lungi and top, they get a lot of criticism. So this is an angry reaction to it, and pleading the men to be reasonable. And this thing, our ethnic quality doesn't depend on just what we wear, but what we are inside. That's what it's about. Thank you. उतना अंदर गए तो कैसे चलेगा? Where are you from? Yes, it is. I want it. Yeah. Take Thank it you. home now. Huh? Yes. I take it at my home. And I write my name. Yes, okay. Some time pass. Talking about it in Tura. You always do it as a child, no? ಮೊನ್ನೆ ಜಗಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಗಿಡುಗವೊಂದು ಕೊಕ್ಕು ಮಸೆದು ಹಾರಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಜಗಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಗಿಡುಗವೊಂದು ಕೊಕ್ಕು ಮಸೆದು ಹಾರಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಿಟಿಕಿ ಬಳಿ ಕರೆದು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ಬೀಗಿ ಕುಳಿತ ಕಾಗೆ ಸಾರು, ಕಣ್ಣ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯ ಮೀನು ಸಾರು.
ಚಾಚಿದ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತುತ್ತು ಎತ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳದೆ ಹಾರಿ ನಾಳೆಯ ಪಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಿ. ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಮಂತದ ಹಕ್ಕಿ. The other day, an eagle glided into the sit-out, sharpened its beak against the stairs, and flew away. Afternoons, a row of crows sit on the windowsill, conceited like invited guests. On the table is a plate of fish that catches their attention. They snatch the morsel offered on hand, not a word of thanks, fly off to come again for the next shift. Once upon a time, autumn birds visited here. Having observed his wife for some time, Cullen was about to call out her name. Just at that time, a girl of about 5 years came out of the kitchen and her eyes fell on Cullen. The child looked exactly like One May. One May is daughter of Cullen. Then this child coming out from the kitchen was granddaughter. Therefore, as soon as Cullen saw her, he surmised that she must be One May's daughter. Who could be the child's father? Cullen wanted to know so much. Looking at the child directly, Cullen moved a few steps towards them. Then the child moved towards her grandmother and standing, watched his advice. Grandma, Grandma, a beggar is coming, whispered the child to her grandmother. Having come near them, Cullen could not but overhear their conversation. When the grandmother abruptly turned, she saw the face that she never expected to see again. When I publish my poems, I do like this. This side I give Garu, this side is English. For every poem, that's what I have done. For Garu, and first I give Garu, and then in English. I'll read the English Garu portion first, and then the English one. Hindu mateni bimangkwa dona maina bimangkuni wa singa angnadi gwara changa sapani gitsasa ni kusina arogisek toptomna singengpa bimangara noksek teblo sukong edonga shivani bimango. Here by a carpenter father, the carpenter's son, I mean Jesus. When peace descends, that's the title of this poem. Why the figure of a Hindu deity? Looking at the figure, asks he, to me, it's an art piece to enjoy and be at peace. The figure in question sits cozy on a corner table. In the figure of Shiva, I see the beauty in the pose of the dancing figure. She's been asked why the picture she sent for the sparrow, the poster, is very different. And तब हम जवान थे. Read out my girl. She says it belongs to the period when she wrote the story, which was 30 years ago. The rat. माफ करना मैं स्टोरी ऐसी है. It's a very naughty story. थोड़ा मैं उसी टाइम घबरा रहा हूँ कि हम लाइन पढ़ने लगे. 2 लाइन पढ़ो ना 2 लाइन. नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं. चूहा. नाम है चूहा. दो लाइन तो पढ़ो. मेरे से मिलने लगी. No, I cannot read my story. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਚੂਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ. ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ,
ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਤੇਰੀ ਹੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖੜਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਰਾ ਠਹਿਰ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਥਾੜ। ਇੱਕਦਮ ਦਰਬਕ ਕੇ ਮਰਦ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕ ਕੇ ਮਰਦ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਦੁਆਲੇ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪੌਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਪਏ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਔਹਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। मेरी कहानी का नाम है मिठे परौंठे। बच्चे दी जिद तौबा तौबा, जिस गल तो तुसी हटकोगे ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਲਈ ਵਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਲਾਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਸੂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਏ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੋਟੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਟੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਦ ਸੁਸੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਫਾ ਖੂਨ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਵੱਲ ਲਪਕੀ ਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੇਡਦਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ। ਸੱਸ ਦੌੜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੂਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਜੀ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਐ? ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ? म यति बिघ्न विशृङ्खल सायद यसै कारण पनि कि मेरो जन्म एउटा यस्तो स्थितिमा ढुङ्गाको चेपको बिरुवा जस्तो म नितान्त माझको सन्तान, न ठुलोको महत्त्व न सानोको ममता। आमा भन्नुहुन्छ, भाइ जन्मिएको बेला म आमाकै छेउमा ढुकिबस्थेँ, एउटा प्रतिवाद जस्तो निरन्तर ढुकाइ चुस्दै गरेको दुध खोसिएकोमा। जब पनि सुत्केरी आमा र भाइ निदाउँछन्, म दुध चोरी चुस्थेँ र छुटाउनलाई कहिले आमाले बल पनि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले 2 वर्षमा आमाको काखबाट झरेर दिदी भएँ। 5 वर्षमा अर्को बहिनी आङमा बोकेर बोस साथ खेल्न सिकेँ। 8 वर्षमा घरमा काम सघाउन थालेँ र 11 वर्षमा कल्पना गर्दै भावुक कविताहरू लेख्न थालेँ। When I first heard about the camp, the idea itself I liked very much, because I think bringing together the women writers of all the languages, it's just fantastic. And especially spending 4-5 days together, living together, I think that was the most attractive part of it. So when I came here with that kind of expectation just to share ideas and talk to other writers, I found it was much more than the writers' camp. As Lakshmi rightly put it, it was a celebration of women writers. I found that it was not only the celebration of writers, it was the celebration of writing itself. I think it was very important to feel, that you are doing something and all of us, we are admiring each other and exchanging ideas. So I think it's a great thing. It's a new experience for me, and the camp has been arranged by Lakshmi and her Sparrow group in a fantastic way.
It's very different from the other seminars or camps which I had attended. The main thing is in other seminars, people present papers. And that's all. They present the papers and then they are not in the scene. Here the writers are made to read their stories. For writers, their stories or their articles or poems are very important, you know. Feel comfortable with them rather than talking about them. So even here while talking to you, I am feeling a little embarrassed and not sure what I should talk. But regarding our own creations, we are more free about it. So here Lakshmi has given importance to the creative writings. So each person reads in her own native tongue, and then it is translated version is read out, and we have lot of time to interact with each other. So that is really, we can never forget this experience. About 20 different language writers, 50 writers of 20 different languages, staying in one place for 5 days. And like friends, we have been interacting with each other. More time is given to interactions rather than reading papers or seminars like that. I enjoyed the camp, and it's beyond my expression the welcome we received. And I know this type of welcome, I think for every writers this will be the first experience, a grand welcome, because it's beyond our expression, the grand welcome we receive. And we love the foods. In every meal we have interesting food, so we are waiting for the next meal. What would it be? We like it's interesting food. We want to know about the Mizoram women writers particularly. We have few writers. There are 5 or 6 writers, but some are, they don't write literature, they just write other subject, means which we can't say literature. But there are few. They are quite 70 years, 65 years. There are men writers, but women we are few. I'm not a good writer, but I'm compelled to come because the person are few.
ठंडी बचती है नहीं नहीं, वो बोल रही आप प्यार में पड़े। And I'm going to recite a couple of romantic poems today. First in Punjabi. दर्द मिलदा ही रहा दरिया बन के दरगाह बन के इंतज़ार सफ़र करदा ही रहा रुख दौड़दे रहे फुੱਲ झड़दे रहे प्यास वधदी ही गई खूह गिरदे रहे मींह वरदे रहे प्यार फैलदा गया ज़मीन बन के आसमान बन के अर्थ बदलदे ही रहे नज़ारे बन गए नज़र बन गए रंग गल्लां करदे रहे तू बन के मैं बन के. Now in English it is love spread. Pain crosses my path, at times as a river, at others as a tomb shrine. Waiting remains in journey, trees on the run, flower petals falling. Thirst keep on increasing, wells keep on moving, rain continued itself. Meaning remains in flux, at times turning into scenes, at others into viewpoints. Love remains spreading, like land, like sky. Colors remain chatting, by becoming you, by becoming me. And this is my favorite poem. I'll read the translations only. This morning I was fetching water. Some drops fell on the floor. To write a letter to you, I worked my finger on them. In a movement, the text of letter evaporated. I don't know whether it has reached you. Thank you. तुसेंगी खिंज ही शिकायत ही जे अऊं मता बोलनियां थार थार भेत खोलनियां संस्कारें दी रीत रिश्तें दी प्रीत फड़ी चलने दी जिद करनी लाओ अज में अपने बुल सी लैते लाओ अज में अपने बुल सी लैते अपनी इच्छा अस्तित्व पी लैते तुंदे शा अपने आपै गी करी लिया है बख मेरे अंदर दी बेपनाह लवारस औरत मेरी नासे रस्ता बाहर आने की
जीभ ते कंठ विचकार तड़फा करती है। Cast the last look at me. You always complain that I am a chatterbox. Here and there and everywhere, I expose some scars and traditions. Relationships I honor, I hold their banner. I insist somehow on carrying on. Take it from me. Today I have sewn my lips. I have sipped in my own existence, have slashed myself away from you. The inexhaustible, orphaned woman in me is about to jump off from my eyes. Between my tongue and throat, she slithers. It's a poem to my grandmother, and it's a very unabashedly romantic, very unabashedly baroque reconstruction of her early years, or what I imagine her early years must have been like. It's called Heirloom. My grandmother, wise even at 8, hid under her bed when her first suitor came home. Grave and serene, her features defined as majestically as a head on an old coin. I realize, through photographs, clouded by the silt of seasons, like the patina of age on Kanjivaram silks, that in her day, girls of 8 didn't have broken teeth or grazed elbows. Now in her kitchen, she quietly stirs ancestral aromas of warm coconut lullabies, her voice tracing the familiar mosaic of family fables chipped by repetition. And yet, in the languorous swirl of sari, she carries the secret of a world where naikas still walk with the liquid tread of those who know their bodies as well as they know their minds, still glide down deserted streets to meet dark, forbidden paramours whose eyes smolder like lanterns in winter, and return before sunset, the flowers in their hair radiating the perfume of an unrecorded language of romance. The secret of a world that she refuses to bequeath with her recipes and her genes. Thank you. Bass notes. How come your hair is so silky? The black musician asked. And she, half asleep, said Hong Kong was full of gloss. And sometimes the place got into your hair. He was a professional, and they were playing games with each other. Fine-tuned notes on silken skin. The trouble, he said, is you're too sensitive, and drew music from the guitar strings on her head. It was when he got to the bass that something changed. Later, he asked, anxious, "Did you, baby, did you?" For at a crucial moment, there were silences he didn't expect. "I always come quietly," she told him, not adding, "I always go quietly too." Thank you. It's called Naked. I hardly knew her till someone mentioned, "Poor thing, and not even 29." Marzieh Meshkini, I can never remember her name. You know, the wife of the famous. One day, a girl wakes up to find she is a woman just because she has turned 9. She cannot show her face naked anymore. Black chador billows like a sail along a sea of bicycles, and a tribe of horsemen ride to break one slim, young woman's pride. A sea of people on the steps, flyaway hair and arms still warm from the hall
where we have sat in thrall. How wonderful her use of colour, the old woman's naked teapot, and the Norwegian girl with the body of belly and bump. Women can be so unexpectedly beautiful. And then I see this striking face, her shaved head, her outstretched hand, and I hold it tight. I hardly knew her till this moment when she stands on the steps below me. And I don't say, "How's it going, the chemo?" That's not the kind of thing one says to a woman who wears her face untouched by her body's plight. Her shaved head, a naked sword plunging into light. औरतें और नाखून अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर और मारे डर के जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे। छूटती गई जगहें परंपरा से छूटकर बस यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूँ। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर मैं पहुंची हूँ, ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। Without a place. This is how the shloka goes. Women, nails and hair. Once they've fallen, just can't be put back, said our Sanskrit teacher.
విధి హరి దేవిత తప్పుడు దిక్కుడు తగదరికి తగతాం తప్పుడు దిక్కుడు తగదరికి తగతై కై కకవనముని జన సకల సురాసుర తనుట పాద కింకిని తం తం జన 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 హృదయ గరి గణ 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 విధి హరి దేవిత తప్పుడు దిక్కుడు తగదరికి తగతాం తప్పుడు దిక్కుడు తగదరికి తగతై తై తక్కడ తగదు తరికి తగతాం కోడల కోడల కొడుకు పెండ్లమ్మా ఓయమ్మ పచ్చి పాల మీద మీగడేదమ్మ ఆహు ఆహు కోడల కోడల కొడుకు పెళ్ళమ్మా ఓయమ్మ పచ్చి పాల మీద మీగడేదమ్మ ఆహు ఆహు means the mother-in-law is asking the daughter-in-law, Kodala, daughter-in-law, you have swollen, you have eaten away the cream on the raw milk. Where has it gone? Now the daughter-in-law says, Attamma ni cheti yaarelle kaani oyamma pachi paala meeda meegaduntunda ahu ahu Attamma ni cheti yaarelle kaani oyamma pachi paala meeda meegaduntunda ahu ahu. The daughter-in-law says, mother-in-law, you are just losing tongue about me. Is there anywhere the raw milk does contain any cream at all? In your eagerness to point out, you are going in wrong track. That's all. Attamma ni noti yaaralle kaani oyamma pachi paala meeda meegaduntunda ahum ahum ahum. शोभित सुंदर चली हाव पिराई मजी सोळा पळून दिसता हाशान म्हाका दिसाक 17 वेळा शोभित सुंदर चली हाव पिराई मजी सोळा पळून दिसता हाशान म्हाका दिसाक 17 वेळा दिसता म्हाका मिस कॉलेज जावन कॅट वॉक करचे दिसता म्हाका मिस कॉलेज जावन कॅट वॉक करचे नोटी बॉयजांच्यो नदरो पळोवन धादोस धादोस जावचे नोटी बॉयजांच्यो नदरो पळोवन धादोस धादोस जावचे इश्टिणी म्हणटा ती पिशी पिराय तांकांय अशेंच जाता तांचे अणभव आयकतना आंगार काटो फुलता शोभित सुंदर चली हाव पिराय मजी सोळा पळून दिसता हाशान म्हाका दिसाक 17 वेळा हाली अभ्यासान लक्ष लागना नदर जायत भिरभिरता घरान भायर एकटे आसतना परते परते सपन येता इश्टिणी म्हणटा ती पिशी पिराय तांकांय अशेंच जाता तांचे अणभव आयकतना आंगार काटो फुलता शोभित सुंदर चली हाव पिराय मजी सोळा पळून दिसता हाशान म्हाका दिसाक 17 वेळा नीक मेरी अख काशनी दूजा रात देव नींदरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई वाल वांदी ने ध्यान जदों मारिया एक मेरी अख काशनी एक मेरा दियोर नी बुरा पैड़ा गोरिया रन्ना दा शौकी टुक टुक नेड़े बैठदा कोले डाके रंगीली चौंकी नी इसे गलों डरदी ने अजे तक भी मैं कुंड ना उतारिया एक मेरी अख काशनी नीक मेरा कंत सियो रात चाननी च दुध दा कटोरा हल्के गुलाबी रंग दा ओदे नैना च नशीला डोरा नी इको गल माड़ी उस दी लाई लगनी ओ मां दा वगाड़िया एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींदरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई
ਵਾਲ ਵਾਉਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ओ बेले वो बेले ओ बेले वो बेले मोकेदा कडलिड पाईदा ओडोडु मोकेदा कडलिड पाईदा ओडोडु जोकेडे ಗೊಬ್ಬುವ ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಜೋಕೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುವ ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಓ ಬೇಲೆ 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 ಮುಡಾಯಿ ಜಾಮೋಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಪೋಡು ಮುಡಾಯಿ ಜಾಮೋಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಪೋಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೋಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೋಡು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೋಡು ಪಾರಿ ಪನ್ಪೋಡು ಓ ಬೇಲೆ 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 ಮೋಕೆದ ಕಡಲಿಡು ಪಾಯಿದ ಓಡೋಡು ಮೋಕೆದ ಕಡಲಿಡು ಪಾಯಿದ ಓಡೋಡು ಜೋಕೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುವ ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಬಾನದ ಜೋಕುಲು ಓ ಬೇಲೆ 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 Khor len kol kan thira tlang lang ro mei zam kara ta tikhian lai tua la lengang mo mana sui lurol pui hi don ve mo ta di bia nem o leng her moi nang ang renga sui long min len ka tong lo karma la se ka ngai zual te ka ngai te o ka ngai ber te eng tika kan ngai abangang mo o zual zan tiang chuni tini le mang der thiam min tiriang mange phong ba lo chuan nam ngai ka bang don lo बिमल ने पूर्वाग्रह की बात इसलिए जोर देकर कही क्योंकि बिमल का मानना है कि उनकी माँ के प्रति मेरा व्यवहार भावनाहीन और पूर्वाग्रहों से भरा है। मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी रूना माँ की लाडली बने, उनके पास जाए। फिर भी बिमल ने हमेशा मेरी सुनी अनसुनी कर दी। रूना हमारी 7 साल की बेटी। बिमल का कहना है कि रूना को माँ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता और फिर मेरे पास ऐसे करने का कोई ठोस कारण भी नहीं। मेरी दलील हमेशा ये होती है, हमें अपने बच्चे को अपने ढंग से पालना है। संकुचित और पिछड़े विचारों का बीज मेरी बेटी के मन में बोने से रोकना है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस ऐसी है जिसे मैं नाबूद नहीं कर सकती। बिना फोन इस बुढ़िया की बात को सुनेगा कौन? रूना बेटा, मुझे इतना ही बता कि दर्शन कराने के लिए तेरी माँ रोकती तो नहीं ना वो दीवार के? तुझे पता है
कि शहर के बाहर एक दीवार मिली है 400 साल पुरानी। पता नहीं उस पर आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। पहले उस दीवार की जगह विशाल मंदिर था, इतना पवित्र कि एक बार वहां पूजा कर लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाए, भवसागर पार हो जाए। हमारे पूर्वज वहां पूजा करने जाते थे। अब 2 दिन पहले मुस्लिमों ने दावा किया कि दीवार उनकी मस्जिद का एक हिस्सा थी। अरे इसी कारण तो ये दंगे फसाद। तो मैं वहां दर्शन करने नहीं जा सकती। मुझे तो सिर्फ दूर से ही दर्शन करना है। இப்படிப்பட்ட ஒரு முகாமில் வந்து பங்கெடுக்கிறத பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? ஆக்சுவலாக இந்த கேம்ப் வந்து முதல்ல எங்களுக்கெல்லாம் ஷெட்யூல் அனுப்பப்பட்டப்ப நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஒரு 50 ரைட்டர்ஸ் ஒன்று சேர போகிறோம் வேறு வேறு மொழியிலேருந்து. ஸோ நம்ம வேறு மாதிரியான நம்மளுக்கு காட்சிகள் தெரிய வரும் அந்தந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லேருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து ஐ தாட். பட் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிக் லேண்ட்ஸ்கேப், ஒரு பெரிய வெளி கிடைக்கிது நமக்கு. நம்ம வந்து ஒரே ரூமில் அடைஞ்சிருக்க போகிறதில்ல. அண்ட் இந்த இடமும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வெளிகளை, விதவிதமான வெளிகளை திறந்து கிடக்கிறதா இருக்குது, திறந்து விடுறதா இருக்குது. இந்த அமைப்பே அப்படி இருக்குது, இந்த நில அமைப்பே அப்படி இருக்குது. அது ஒன்று. அப்புறம் பேசுறதுன்னு இருக்கிறது இல்லையா, நம்ம உரையாடுறதுன்றது. ஒரு உரையாடல் வந்து ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அது வந்து வேற எங்கேயும் முடிகிற இடமெல்லாம் நம்ம கண்டடைகிறோம். நம்ம கான்வர்சேஷனை முடிச்சிட்டா கூட நம்ம திரும்ப தனிமையில் போய் அந்த கான்வர்சேஷனோட நம்மளை ரிலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அது இங்கே நடக்குது. ஸோ வெளிப்பாடுங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப வலிமையாக போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது. 3வது நாள் இன்னைக்கு. But it has strengthened, you know. Talking of spaces, I'm not sure whether it's actually terribly relevant, you know, in the context of Mizos on the whole, because as we keep on telling people, it might not be terribly believable perhaps, but I don't think women over there, or in the Northeast as a whole, face the same kind of problems that you know, that women elsewhere do. Although we do have problems, it's not that we don't. But now, although at the same time, you know, it's rather ironic that the subject of my poem, who is the first Mizo poet, as we call her, about 300 years ago, she lived. Her name was Mwaki, and funny thing is that, you know, she was so prolific. I don't know if this is where myth and fact blur over here, but it is said that she was buried alive when she was very old because she was so prolific. She wrote so much on every subject under the sun, and they said that they wanted, you know, future subjects for future generations. So then they buried her alive, and they buried her with a gong, because that's the way that poetry used to be composed before. You have a gong, and then you speak or you chant the lines. And this, they said that you could hear her gong, you know, beating under the earth until it finally fell silent. So in so many ways, it is a very powerful symbol, I feel. Not just for women who write poetry, but also for poetry on the whole. When the word is going to be silenced by certain people. But then it goes on, you know, it just goes on and on. உங்கள் முதல் தொகுப்பு அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். அது முதல் தொகுப்பு ஒரு டைரியில் எழுதி வைப்பேன். வீட்டில் வந்து நான் எழுதுறேன்ற விஷயம் தெரியாது அப்படின்றதுனால அது ரொம்ப பாதுகாத்து வைக்கணும். பல கவிதைகள் என்னுடைய கணவர் எடுத்து கிழிச்சு எறிஞ்சிருக்காரு. அப்புறம் நானே வந்து அவர் படித்ததுக்கப்புறம் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப மோசமாக சண்டை போட்டிருக்காரு. வந்துட்டு நீ இப்படி மோசமாக எழுதுற அப்படின்னு சொல்லி, அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் அவர் முன்னாடியே கிழிச்சு எறிஞ்சிருக்கேன். கிளி அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு. வந்துட்டு கிழிச்சு எறிஞ்சிருக்கேன். இப்போ அந்த கவிதைகள் பல கவிதைகள் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். அப்போது அந்த நோட்டை வந்து நான் ஒழிச்சு எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. அப்போ அதை நான் வந்து காலச்சோடு பப்ளிஷருக்கு வந்துட்டு நான் போஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் அதை வந்துட்டு ப்ரெஸ் அவங்க கேட்டாங்க, சரி நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். நான்
அப்புறம் அது பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு வந்து. அப்போ ஒரு ஃபோட்டோ கேட்டாங்க, ஃபோட்டோலாம் என்னால் தர முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் இடையில கரெக்ஷன்ஸுக்கு அனுப்புகிறோன்னு சொன்னாங்க. அனுப்ப வேண்டாம், இங்கே வந்தால் எனக்கு பிரச்சனையாகும், அது தெரிய வேண்டாம் யாருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். அப்புறம் அது பப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த புக்கை நேரில் பார்த்தேன். அது இடையில கரெக்ஷன்ஸ் போடுறதுக்கான அது என்னுடைய எழுத்து வந்து ரொம்ப மோசமான ஒன்றா இருக்கும். கிறுக்கி நான் எழுதுவேன் வந்து. அது பல லைன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு புரியாமல் வந்து பல வார்த்தைகள் பல விடுபட்டி போய் தவறான படியும் முதல் தொகுப்பில் அந்த மாதிரி முதல் எடிஷனில் அப்படி வந்தது. அப்புறம் அந்த புக்கை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன், இப்படி பல கவிதைகள் வந்துட்டு அர்த்தத்தை மாற்றுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இருந்தாலும் கூட முதல் முறையாக அந்த இது இப்படி ஒரு தொகுப்பாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் நினச்ச வாழ்க்கையில் பார்க்காத ஒரு விஷயம் அது நடந்தது. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். அது வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது. அதனால் விவரிக்கவே முடியாது. இது தேவியின் உடம்பின் நீட்சி, சிவனின் வில்லையே ஒரு கையால் தூக்கியவள் நீ. இந்த வீணையை நீ எளிதாக ஆட முடியும், முயல்வாயா? எனக்கு கற்றுத்தர முடியுமா? உனக்காக போர் செய்து தோற்றவன், இசையை அத்தர மறுப்பேன், நிதமும் பயிற்சி தருகிறேன். உன் குருவாக இருந்து இந்த வனமெங்கும் இந்த இசையின் ஒலி உடைப்படுத்த பாயட்டும். இதை சாதாரண வாத்தியமாக நினைத்து விடாதே, இதை உன் வாழ்க்கையாக எண்ணி இதை வாசி. இந்த ருத்ரவினை தன் மடியிலிருந்து எடுத்து அவள் பக்கம் நீட்டினான். அது கீழே தரையிலேயே இருக்கட்டும் என்றாள் சீதை. ஏன்? அது என் வாழ்க்கை இல்லையா? பல கைகள் பந்தாடிய வாழ்க்கை. அதை நானாகவே என் கையில் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று விட்டு ருத்ரவினை தூக்கி மடியில் வைத்துக் கொண்டாள் சீதை. It is an extension of Devi's body. You lifted Shiva's bow with one hand. You should be able to conquer this instrument easily. Will you try? Will you teach me? I did battle for you once and was lost. Would I deny you music? I will be your guru and give you lessons every day. Let the music break out of the veena and flow everywhere in the forest. Don't think of it as an ordinary musical instrument. Think of it as your life and play on it. Here. He lifted the Rudraveena from his lap and stretched it out towards her. Leave it there on the ground, said Sita. Why? It is my life, isn't it? A life that many hands have tossed about like a ball. Now, let me take hold of it, take it into my hands. So saying, Sita lifted the Rudraveena and laid it on her lap. মেয়ে মানুষের লাশ, সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ, মেয়ে মানুষের লাশ আটকে আছে, বেরুতে পারছে না। তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে, তার মুখ ফেরানো রয়েছে সংসারের দিকে, তার মুখ ফেরানো রয়েছে পুরুষের দিকে। প্রহারে প্রহারে তাকে পর্যুদস্ত করে গেছে যে পুরুষ, তার মুখ ফেরানো রয়েছে তার দিকে। বোকা, অভিমানী, আদর কাঙালি মুখ ফেরানো রয়েছে আজও জীবনের দিকে। সাগর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ, মেয়ে মানুষের লাশ আটকে আছে, বেরুতে পারছে না। बुन एक मांगलो जलक, बुन एक मांगलो जलक, मुदा सागर सो छल प्यास पैग। बूंद एक मांगलो जलक, मुदा सागर सो छल प्यास पैग। तापस वाला संजीवन अद्भुत, मन कोनो बात पर कसकल नहीं। तापस वाला संजीवन अद्भुत, मन कोनो बात पर कसकल नहीं। ई शिकायत अधरों पर नहीं आयल, ई शिकायत अधरों पर नहीं आयल, मेघ किए खम्मर आंगन बरसल नहीं। ई शिकायत अधरों पर नहीं आयल, मेघ किए खम्मर आंगन बरसल नहीं।
unquenched thirst. I asked for a drop of water, my thirst loomed larger than the ocean. A maid in penance I was, nothing could lure me, for sure. Clouds floated by without a drop of rain, yet my heart knew no complaints. Solmelu to everybody. Solmelu means pranam. Pranam to everybody. Pranam to Sparrow Project. Pranam to my language, mother tongue, Tolo. Thank you. I am reading a small passage from my next short story, Ravandi Renke. ಕಮಲಕ್ಕೆನ ಪುಣ ಸುಡ್ದು ಇಲ್ಲಗವತ್ತಿನ ಶಂಕರಗು ಜುವ ಸಂಕಡಾಂಡ್ ದುಃಖ ಪಚಿತಾಪದ ಸುಳಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಬೂರ್ದಿನಾಯಗ ಇರ್ಲಿಡಿಲ ಜಾಗರಣೆನೆ ಕಮಲಕ್ಕೆನ ದುಃಖ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿ ಕಮಲಕ್ಕೆನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತದೆಂಡ ಅಲೆನ ಜುವ ಒರ್ತುದುಲಿ ಕಮಲಕ್ಕೆಗು ಗಂಗಸರತ ಚಟ ಎಂಚ ಸುರಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಬಾಲೆ ಬಂಜುಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಕಂಡನಿನ ಕಾತು ಕಾತದೆ ಜವ್ವನ ಸಿರ್ಕಾವನ್ನಗ ಪರ್ಪಾಟದ ಒಯ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕಿಯೋಲ. Title of the poetry is Yuddhara Hami. एउटा अघोषित मौन युद्ध लडिरहेछौँ हामी. एउटा अघोषित मौन युद्ध लडिरहेछौँ हामी. कहिले मनसँग मनको, कहिले शङ्कासँग विश्वासको, कहिले कान्छा बाह्र कान्छी आमाका सन्तान जस्तो. जिते जिते जस्तो हार, जिते जिते जस्तो हार, हारेर पनि जितेको जस्तो अनुहार लिएर सूर्योदय नभई शङ्खनाद हुन्छ. सूर्योदय नभई शङ्खनाद हुन्छ. दुन्दुबी बज्छन्, हामी फेरि लड्न जमजमाउँछौँ. अस्तित्व खोज्न अस्तित्व नै मेटाउँदै. मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ न दिन का तेज उजाला है, न रात की गहरी तारीकी. हल्की सी हवाएं चलती हैं, हल्की सी घटाएं छाई हैं. सतरंगी फुहार बरसती है, ये मेरे दिल का मौसम है. मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ न दिन का तेज उजाला है, न रात की गहरी तारीकी. हल्की सी हवाएं चलती हैं, हल्की सी घटाएं छाई हैं. सतरंगी फुहार बरसती है, ये मेरे दिल का मौसम है. मेरे दिल के इस मौसम को जान सको, पहचान सको. मेरे दिल के इस मौसम को जान सको, पहचान सको. बिना झिझक चले आओ, दस्तक की कोई ज़रूरत ही नहीं. दिल का किवाड़ मैंने खुला रखा है. રૂપા ગ્રીન રૂમની ધમાલમાં માત્ર બેલાને જોતી ઊભી હતી. બેલાના આત્મવિશ્વાસથી, એના જળહળ લાવણ્યથી, એની મૃદુ મોહક વાણીથી કોઈ પણ માં હરખેલી થઈ શકે. જનકનું તો બેલામાં જાણે કશું જ નહોતું, એક પણ અણસાર નહીં. બાપનું નામ પાછળ ન લખે તો પણ ચાલે. મમ્મા, મને જરા પીન પાછળ નાખી આપો ને. બેલા નજીક આવી ત્યાં તો સુગંધના પારદર્શક આવરણમાં રૂપા લપેટાઈ ગઈ. યો મમ્મા, એમ આઈ રાઈટ? ઓ માય સ્વીટ ડિયર મમ્મા. પણ આ પ્રશ્ન બોલાયાની તો કેવળ ભ્રાંતિ. રૂપાથી ખરેખર કંઈ બોલાયું જ નહોતું. કદાચ કયા વાક્યમાં કાળ ગોઠવી શકાય એ નક્કી કરવામાં વિલંબ થયો હશે કે ગમે તેમ, એ કંઈ જ બોલી નહોતી. એમાં જ તો સૌમિત્રના ચહેરા પર પરિચય કે પરિચયના આનંદ આશ્ચર્યનો ભાવ વંચાતો નહોતો. એ હજી એમ જ ઊભો હતો, કોઈ અજાણી સ્ત્રી સામે ઊભા રહેવાય એ રીતે, વિવેકથી, નીવડેલા કલાકારની કેળવાયેલી શાલીનતાથી. બેલા કામ અંગે અગી પાછી થઈ હતી તે હવે નજીક આવી. એને જોયું કે મમ્મા ખભા પર સાડીનો છેડો લપેટી દ્રઢ પગલે ઓડિયન્સમાં જઈ રહી હતી. સૌમિત્ર અને મમ્માની ઔપચારિક વાતચીત બેલાએ સાંભળી જ નહોતી, અને માનો કે સાંભળી હોત તો શું.
શું છે કારણ મારે જીવવાનું? અરુંધતી will present English. ના, હું કલમો પડીને સુરૈયા બનવા નથી માંગતી. કારણ કે આ દેશની તમામ સુરૈયા, સલમા, ફાતિમા, શહેનાઝ કે અમીનાથી હું અલગ નથી, આઘી નથી, અળગી નથી. જ્યારે જ્યારે આ દેશના દુશાસનો સરેઆમ એમના દુપટ્ટા ખેંચે છે, ત્યારે હું પણ નિર્વસ્ત્ર થઈ જાઉં છું. જ્યારે જ્યારે હિંસ્ર પશુઓ એમના શરીરને સ્પર્શે છે, ઘસે છે, ખોલે છે, ચૂંથે છે, ચોળે છે, દાબે છે, ઘૂસે છે, ચૂસે છે, ઘૂસે છે, અંદર ફાડે છે, લોહી લુહાણ કરે છે એમને, ત્યારે ત્યારે હું પણ રહેસાઉં છું એ શત સહસ્ર કોમી શિષ્ણાસ્ત્રોથી. જ્યારે જ્યારે એ લોકો સગર્ભાઓના પેટ ચીરે છે, નાળ તાણે છે, ગર્ભને ખેંચીને બહાર મરડી નાખે છે, મોંથી જ માણસ જાતને, ત્યારે ત્યારે ચીરાવું છું, ઉજરડાવું છું, ખતમ થઈ જાઉં છું, મૂળ સોટી હું પણ. જ્યારે જ્યારે ગેસની કોઠીઓ અન્નપૂર્ણા મટીને માણસ ખાવ મગરીઓ બની ભરખે છે, ત્યારે ઝાળ ઝાળ થઈ જાઉં છું હું, ભસ્મીપૂર, ભડકો, ભરભર, ભુક્કો. મરતી રહું છું, મરતી રહું છું પળે પળ. I die every moment, breath by breath. My breasts overflow for them, all of them. When Rahman, Suleiman, Irfan, Aman, Imran are slaughtered with swords, slickles, trishuls, it's my courtyard that is desolate, my bed empty. And from my henna-covered palms, strips of skin peel off with the color. From my Ahmedabad, it's Shahpur, Daryapur, Juhapura and Jordan Road. It's Behrampura and Shah Alam to the Wadi of Vadodara. Halol, Champaner, Panvad, beginning with Godra, all of eastern Gujarat is in flames. What reason then remains for me to stay alive anymore? But wait, poet, don't give way like this. You are not going to be destroyed like Suraya, Suleiman, Shahpur. You are Sarup, Dr. Sarup Ben, Yogesh Bhai, Dhruv. You have every kind of convenience. You have the luxury to live and to write. So live for the Surayas, the Suleimans, the Shahpurs of tomorrow. At least raise your voice, lift your pen, even take up arms so that they may be safe. Tell me, poet, are you ready? Thank you all. Thank you everyone.
Actually, this camp was in the offing from 98 onwards. I felt a great need for writers to come together because I was a writer who didn't live in Tamil Nadu. I lived outside Tamil Nadu. And it was not easy for writers to come together and share their writings. But I had a lot of reservations about this kind of meeting being a conference because I had an aversion to paper reading. And I also thought that this kind of a meeting of writers from different languages must be done in a celebratory way, that we should celebrate one another's writing so that that will take care of this burden of egos and this undercurrent of jealousies and competition and everything. Because everybody is celebrated here, even the award-winning writers and also the budding writers. So I thought this will be a good idea. But it was difficult to get funding because when I mentioned it as a camp, many of the funders felt that it was like a picnic. They said that how can we give money for women coming together for a picnic? They never thought that the readings were good enough. So I have linked it with a publication program. So all these writers who came for the camp, their writings will be put together in 5 volumes, which Sparrow is bringing out. So then camp was made possible. There was a great need to create a neutral space where people can come together and bring the sounds of different languages. So I chose this place, which is a beach resort. Another thing is that whichever region you're coming from, when you're functioning from within that region and you're writing in that language, very often that context can limit you. It can also limit your language. So I thought that this kind of a space would expand everything, would expand your ideas, would expand your identity, and a lot of narrowness associated with identity and language, would be demolished. And that demolition is very important because sometimes you hang on to an identity because it gives you security. But I think that a writer writes best when she is totally defenseless. When all security is removed and she is in a position of danger, only then she can write.
this camp. For the first time, I enjoy such a literary camp, and most of the thing it is not the reading. I think I find some kind of relax, some kind of quietness, and some kind of I search within myself. I never dreamed about such things. I just thinking reading and chatting with my fellow boys and writing our name and address and talking nice, but it is not. It is something I talk myself alone. I find a chance to talk myself alone here. It is great. I think it is oh my, the bonfire is stopped.